ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं आर्डिनो का पिन आउट। सो मैंने यहाँ पे पिन आउट आर्डिनो का ओपन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्कीमेटिक है और इसमें जो पिन्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ओके, सो पहले इसकी नोटेशंस पढ़ते हैं अपन। सो ऑल दीज पिन्स विच आर colored in orange are known as digital pins. We will see what are digital pins. Okay, don't worry about that. And there are some analog pins also, and pins which are shown in blue color are used for I2C communication protocols, and have pins having sky blue color are used for SPI communication protocols. Okay, and these green color pins are also analog pins. Okay, when there are some power and ground pins. ओके, सो अगर मैं ओवरऑल एक आपको टूर दूँ इस पूरे पिन आउट का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी पिन है उसके सामने कुछ कुछ नंबर्स लिखे हैं और कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशंस लिखे हैं। लाइक अगर मैं इस पिन की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है D14, A0, PC0 एंड ADC0। नाउ व्हाट ऑल दीज मीन्स। ओके, तो समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो पिन है ये D14 is telling that this pin can be used as digital pin. Okay, मैं भी बताऊंगा आपको कि what is digital and what is analog pin, but first focus on this कि this pin can be used as digital pin and this pin is referred as D14. सो अगर मैं इस पिन को यूज़ करूँगा डिजिटल पिन के तौर पे, तो मैं इस पिन को रेफर्ड करूँगा एज अ D14 और डिजिटल 14. ओके, I can also use this pin as analog because this symbol refers to analog pin. Okay, so I can use this pin either as a digital or a analog. So अगर मेरे को इस पिन को यूज करना है एज अ एनालॉग पिन, so I referred it as A0 inside my programming part. Okay, if I want to use this pin as digital, then I have to refer this pin as D14 inside my program. Okay, now what is this PC0? Okay, so guys ये और आप देख रहे होंगे कि जो येलो कलर वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट एवरी पिन पे हमको मिलेगा। और जैसे फॉर दिस पिन दिस इज PC0, फॉर दिस पिन दिस इज PD7, फॉर दिस पिन दिस इज PB4 and this is unique for every pin. Okay, like the pins here, it is PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, etc. So this is different for all the pins. So what is this PC, PD and PB? सो गाइज इसको समझाने के लिए पहले मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा विच इज अ पिन एंड अ पोर्ट. सो बेसिकली what is a pin and what is a port? So this PC means port C0 pin. So this PC0 refers to port C's 0 pin, and this PC1 refers to port C's 1 pin, and this PD7 refers to ports D7 pin. Now what it's mean? So basically what is a pin? So guys, simply a pin is a singular connection or a net. Okay, so like if there is a single net, then it is refers to as a it is referred if there is a physical connection or of a single net, then this is referred to a pin. Okay, like अगर मैं इसको independently देखूं तो this is a pin. Okay, but if I make a collection of similar kind of pins, then it is refers to a port. Okay, so basically अगर मैं इसको independently देखूं तो ये एक पिन है, बट अगर मैं काफ़ी सारे पिन्स का एक कलेक्शन कर दूं तो it makes a port. Okay,
So all those pins, all these pins here, like D14, D15, D16, D17, D18, D19 makes a port C. Okay, port C. And all these pins have a unique identity for referring them, like this D14 pin also known as PC0, these D15 pins also known as PC1, these this D16 pin also known as PC2, likewise all others. Okay, now what is the use of this port बेसिकली. सो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा इसको समझाने के लिए. पोर्ट. सो गाइज यहाँ पे जो हमने यूज़ किया एटमेगा 328P, दिस इज द पिन आउट ऑफ दिस एटमेगा 328P. बेसिकली ये जो पिन्स हैं इन सबको ही यहाँ पर आर्डिनो ने अरेंज कर दिया है और उनको लाइकवाइज बस उन्होंने अरेंज किया है. ओके, ऑल दीज पिन्स आर सेम. सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वही 328P का लाइक पावर पिन्स, BCC, ग्राउंड और रेफरेंस. ठीक है, तो जो भी पावर पिन्स होती हैं आईसी में वो किसी भी पोर्ट के अंडर नहीं आती, उनका कोई कलेक्शन नहीं होता. ओके, सो उनको कलेक्ट करके कोई पोर्ट नहीं बनाया जाता, तो वो हमेशा अलग ही रहती हैं. लाइक BCC, ग्राउंड, यहाँ पे ये वाली ग्राउंड पेन, देन दिस रेफरेंस पेन एंड दिस BCC पेन. ओके, बट ऑल अदर पिन्स will be differentiate or categorized under some ports. Okay, like from pin number 2 to pin number 6, this is known as port D. Okay, and refers to PD0, PD1, PD2, PD3, PD4. Likewise, from pin number 28 of this IC to pin number 23, these pins are called port C and refers to PC0, PC1, PC2, PC. What is the use of this ports and pin concept? So basically guys, अगर आप Arduino में कोडिंग करते हो, like अगर आप Arduino IDE में कोडिंग करते हो, so you don't need to remember those ports. Okay, you don't need to remember कि कौन से पिन कौन से पोर्ट से बिलोंग करती है या कौन से पोर्ट नंबर से बिलोंग करती है. Like this D14 is of PC0, है ना, दिस D6 इज ऑफ PD6. सो आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो कि पहले से ही सब कुछ डिफाइन जिसमें डिफाइंड है कि कौन सा पोर्ट कौन से पिन के लिए डेडिकेटेड है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द पिन नंबर. You just you will going to just mention the pin number inside your program and you are good to go. Okay, so you don't need to remember which pin belongs to which port. Simple. जो पावर पिन्स होती हैं दे डू नॉट फॉल्स अंडर एनी पोर्ट, है ना, इन द माइक्रो कंट्रोलर. सो लाइक वाइज कि जो आर्डिनो है देर आर थ्री पोर्ट्स इन आर्डिनो उनो. PC0, port C, port B and port D. These set of pins are power pins of Arduino. You can use these pins to either power up the Arduino or power up the peripherals connected to the Arduino. Okay, so like you have connected two three sensors to your board and you want to power supply to this sensor and also to this board. So to give power supply to this board, you need to connect the power supply to V in pin. Okay, which is basically a voltage input pin. Okay, and the ground pin will go to the ground of the Arduino to power supply the Arduino. Okay, now how you give the power supply to the peripherals connected to your board is simple. You just need to connect the VCC pin of these peripherals to the pin 5 volt or 3.3 volt of the Arduino. Okay, so like you have connected a DHT sensor, a soil moisture sensor or any other sensor. So what you need to do is just connect the VCC pin of these sensors to this either 5 volt or 3 volt. Okay, so this 3 volt and 5 volt pins are used to give the power supply to the peripherals. Okay, and this BN pin is used to give the power supply to the board. Okay, so all these are power pins. Now coming to this set of pins. So
these pins are referred as analog pins. Okay. Okay, so what is analog pins? So guys, देखो सिंपल है कि आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपको डिजिटल डेटा ही प्रोसेस करना है, आपको कभी कभी एनालॉग सिग्नल्स भी प्रोसेस करने होते हैं या एनालॉग डाटा भी प्रोसेस करना होता है. ओके, सो फॉर दैट पर्पस you just need to connect that peripheral to your analog pins. Okay, like you are using a potentiometer. Okay, using this potentiometer you are changing the values, to control the LED brightness. So basically what you are doing, you are giving the analogous signal, okay, to the microcontroller. So for accepting that signal you can use these pins, cause these pins are analogous pins. Okay, so they can accept the analogous data or analogous signal. Okay, so now we have seen the what is analog pins. So all these A0, A1, A2, A3, A4, A5 can be used as analog pins. And for using these analog pins you just need to mention in your program. If you are like say if you are connecting potentiometer to A1. Okay, if you want to connect a potentiometer to A1, so what you need to do, you just need to mention in your program that at A1, which is analog 1 pin, you have connected a potentiometer. Okay, so you can use this pin as a analog pin. Okay, now what is this ADC1? Okay, सो बेसिकली क्या होता है गाइस कि अभी जैसे आपने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया, दिस पोटेंशियोमीटर इज गिविंग अ एनालॉगस सिग्नल. ओके, बट ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द एनालॉगस डेटा. ऑब्वियसली इट प्रोसेस ओनली डिजिटल डेटा. Okay, so how this microprocessor will going to process this incoming analogous signal? So for that, all these analog pins have some sort of converters. Okay, which is ADC is analog to digital converter. So if we are using A1, so A1 have a ADC converter which is converting analog signal to digital and then sending it to this microprocessor, so that this microprocessor can process this analog signal. Okay, for further now coming to digital pins. See, there are from D0 to D19. Okay, from D0 to D19 there are basically 20 digital pins in the Arduino board. ठीक है ना, which comes under different ports, like from D0 to D7 these pins comes under port D, and from D8 to D13 digital pins comes under port B and from D14 to D19 these digital pins comes under port C. Okay, but again I am saying you need not to remember these port numbers. All you need to know is these pin numbers only. Okay, so what is digital pins? So now guys we have just seen analogous pins. Okay, so what they do, they accept the analog data, okay, or process the analog data. But okay, so why we use a microcontroller first? So we took some data from the surroundings. Okay, we process it and we perform some particular task or give some output, है ना, according to that data. Okay, so for giving for giving that output we need some digital pins. Why only digital pins? Cause see, this is a microcontroller, okay, and you have connected a peripheral here, like you have connected a motor, okay, or you have connected a LED bulb. Simple. Okay, you have connected a LED bulb here. So now what you want, key as soon as there is a darkness,
this LED bulb will glow. Okay, so you have connected a light dependent resistor to any of the analogous pin. And why we have connected LDR on analog pin? Cause that LDR generating a analogous data or analogous signal. So we have connected that LDR, which is sensing the light of the surrounding and generating an analogous signal, which is given to this board using these analog pins. And these analog pins have ADC converters, which are converting this analogous data into digital and sending it to the microprocessor. Okay, नाउ वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसने प्रोसेस किया कि अच्छा ठीक है, अभी हमने क्या किया कि हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया प्रोग्राम के अंदर कि अगर इससे नीचे लाइट का ब्राइटनेस होती है, सो वी नीड टू ग्लो दिस बल्ब. ओके, सो लाइकवाइज कि क्या होता है कि देयर इज अ डार्कनेस इन द सराउंडिंग और उस थ्रेशोल्ड से नीचे हमारी वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाती है. सो व्हाट विल माइक्रो प्रोसेसर डू? इट विल सिंपली send a signal to this pin. Okay, the pin we have connected the LED, like we have connected the LED to D10, then it will send, then microprocessor send a signal to this pin, okay, to drive this LED. Now what that signal can be? So it can be a 0 or a 1. Now what it's mean? So like you have to glow the LED. Okay, so what is first of all let's understand what is 0 or 1. So 0 is basically logic low and 1 is basically logic high. Okay, so when we talks about digital, then there is a concept of 0 and 1, which says 0 means logic low and 1 says logic high. Means 1 is referred as to plus 5 volt and 0 is referred as to 0 volt. Okay, so as soon as the threshold level goes down, as soon as the values goes down below the threshold level, this microcontroller send a signal to this pin to go on a logic 1. Okay, now what a logic 1 means? It will supply the 5 volt to this pin. Now as soon as the voltage supplied to this pin, then the LED we have connected to this pin will glow. Okay, simple है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है ये इन पिंस को एक सिग्नल सेंड कर रहा है. या तो वो सिग्नल 0 हो सकता है, मतलब लॉजिक 0 पे हो सकता है, या फिर वो सिग्नल लॉजिक 1 पे हो सकता है. लॉजिक 1 मीन्स लॉजिक हाई एंड 0 मीन्स लॉजिक लो. ओके, और जब वो लॉजिक 1 पे होगा, इट मीन्स कि दिस पिंस आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, एंड जब वो 0 पे होगा मीन्स दिस पिंस आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ओके, सो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन जनरेट द डिजिटल आउटपुट्स. ओके, सो फॉर जनरेटिंग द डिजिटल आउटपुट्स वी यूज दीज डिजिटल पिंस. ओके, so there are 20 digital pins in the Arduino Uno. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ पिंस हैं जो कि जिनके आगे there are hyphens marking. Okay, like this D3, D5, D6 and here D11, D10, D9. So basically this is what these pins are PWM pins, which is pulse width modulation. Okay, now what is this pulse width modulation? So basically क्या होता है कि आपने कुछ पेरिफेरल्स कनेक्ट करे, लाइक आपने एलईडी बल्ब भी कनेक्ट किया था अभी. ठीक है, सो क्या हो रहा था कि जब हमारा वैल्यू थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जा रहा था, तो दिस माइक्रो कंट्रोलर इज सेंडिंग अ मैसेज और अ लॉजिक टू दिस पिन. ओके, सो जब ये इसको लॉजिक दे रहा है तो इट इज गिविंग आइदर 0 वोल्ट और आइदर सम वोल्टेज लेवल. ओके, लाइक 5 और 3, व्हाट यू कैन से. ओके, सो either it is sending some voltage or either it is sending 0. Okay, 0 volt. So now we have connected a LED. Now a LED for a logic 1 it will glow, and for a logic 0 it will
it will not glow. Okay, simple. But what if you want to control the LED brightness? Like if here जो कि सराउंडिंग में हमारा जो डार्कनेस थी जैसे जैसे वो कम हो रही है, अब आप चाहते हो कि वो सिर्फ एलईडी है, वो सिर्फ ऑन ऑफ ना हो बल्कि उसकी ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर पाओ। ओके, लाइक कंट्रोल कर सको। सो ये हो सकता है पीडब्ल्यूएम पिंस के थ्रू। ओके गाइज, इसका ये जो पीडब्ल्यूएम है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, बिकॉज दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वी विल ऑल्सो see some programs and projects using these PWM pins. Okay, but for now leave it at here. This D13 pin, which is basically digital 13. Okay, so this pin have a inbuilt LED. This LED is connected to this D13 pin, so you can also use this LED for your in your projects. Now let's see this I2C connections. So yeah, these SCL and SDA. Now guys, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि there are many modes of communication. Okay, और many communication protocols like I2C, SPI, है ना? So I2C प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि आपको दो पिंस की आपको बेसिकली 3 पिंस की नीड होती है, जिसमें दो जो होती हैं आपकी जो मेन पिंस होती हैं लाइक SCL एंड SDA. नाउ SCL इज बेसिकली सीरियल क्लॉक, ओके, और SDA मीन्स सीरियल डाटा. सो आप इन दो पिंस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हो अपने पेरिफेरल के साथ में अगर वो I2C इनेबल्ड है. फॉर दैट you just need to connect the serial clock pins to the SCL and serial data, the pin from which the data is coming to the SDA pin of this microcontroller. Okay, there are two sets of SCL and SDA. One is here D19 and D18, and the second one is this A4 and A5. These two pins are also work as SCL and SDA pins. Okay, for I2C communication. So basically Arduino has two set of pins for I2C communication. One is D19 and D18 and other is see यहाँ पे भी लिखा है D18 and D19. Why? Because these two pins are also used as SCL and SDA to use any of the digital pin. ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रोग्राम में मेंशन करना है D7, D6, D5 जो भी पिन आप यूज कर रहे हो उसका पिन नंबर खाली. Likewise, if you want to use analog pin, then you just need to mention A0, A1, A2, A3 जो भी आप यूज कर रहे हो. ओके, और ये जो एनालॉग पिन्स है आप इनको डिजिटल पिन्स के तरह भी यूज कर सकते हो बाय सिंपली कॉलिंग इट D14, D15, D16, D17, D18. ओके, बट ये जो पिन्स हैं फ्रॉम D0 टू D13, इनको आप केवल डिजिटल पिन्स की तरह ही यूज कर सकते हो. ओके, आप इनको एनालॉग पिन्स की तरह यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बट यहाँ पर ये जो एनालॉग पिन्स है आप इनको एनालॉग पिन्स की तरह भी यूज कर सकते हो और आप इनको डिजिटल पिन्स की तरह भी यूज कर सकते हो. ठीक है गाइज, तो ये था बेसिकली ओवरव्यू आर्डिनो के पिन आउट का. आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा. सो बेसिकली ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ द पिन आउट ऑफ आर्डिनो ऊनो. ठीक है, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा और वी विल फर्दर डिस्कस इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. थैंक यू गाइज.